टॉपिक सीरीज का एक और नया शुमारा लेकर हम मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने दावत दी है सदफ मीर को। सदफ के हवाले से आपको ये बताते चलें, इन्हें एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिली है, चिविनिंग स्कॉलरशिप के नाम से। एक ऐसा प्रोग्राम जो 1983 में शुरू हुआ था और हर साल पूरी दुनिया से 1500 बच्चे ही इसके लिए सिलेक्ट होते हैं और इस मुल्क से हर साल 40 से 50 स्टूडेंट्स ही इसके लिए सिलेक्ट होते हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए कंपटीशन कितना टफ होता होगा। हमारे साथ सदफ है, आइए इनसे बात करते हैं। सदफ, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया, आपका शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। आप कश्मीर में कहाँ से हैं और तालीमी बैकग्राउंड क्या रहा? मैं श्रीनगर से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी बिमना के एक स्कूल से की है, इकरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। पोस्ट माई 12th मैंने अपना बैचलर्स कॉमर्स में डिग्री कॉलेज बिमना से किया है। अब जाहिर सी बात है, ये जो एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप आपको मिली, ये एक दिन का ख्वाब तो नहीं होगा या एक दिन की मेहनत तो होगी नहीं। इसके लिए जाहिर सी बात है आपने प्रिपेयर किया होगा। कितना टाइम लगा इसके लिए प्रिपेयर करने में, कितना वक्त दिया आपने? एक्चुअली आई हैड अप्लाइड लास्ट ईयर एज वेल। ये मेरा सेकंड चांस था फॉर दिस स्कॉलरशिप, बट पहली बार में आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर दिस। So I would say all in all, it's taken me 2 years to get here. जब आप डिग्री कॉलेज बिमना में पढ़ती थी तब क्या ख्वाब रखती थी, किस तरह के ख्वाब थे? Actually, that was not the plan. अचीवने का कोई प्लान नहीं था. I was studying commerce था, and the plan was to go for an MBA here in India. I am sick. तो वो प्लान था, बट ड्यूरिंग कॉलेज आई यूज्ड टू आल्सो वॉलंटियर इन अ कपल ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस इन कश्मीर। मैं ऑर्फनेज में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, and I also used to volunteer with these organizations. I used to help them with fundraising and administration stuff, and that is how I got introduced to the development sector, and I developed an interest in the sector, in the educational domain. And hence I decided to change the trajectory post my bachelor's, and I, instead of going for an MBA, I went for Teach for India fellowship, which is basically a 2-year fellowship through which you teach marginalized children in underprivileged communities in India, and while also developing your leadership potential. It allows you basically to kind of explore the educational landscape in India as well. ये एक छोटी बात नहीं होती है, हर कोई ये नहीं कर पाता। आप एक नोबल कॉज के लिए आगे बढ़ी, आप ऑर्फनेज जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये काम सभी नहीं करते, यकीनन आपका जो ये काम है ये काबिल सताइश है। लेकिन इसके साथ आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आप मखसूस स्कॉलरशिप के तहत बाहर जा रही हैं, ये सब्जेक्ट कौन सा है जिसके लिए आप बाहर मास्टर्स के लिए जा रही हैं? जी, तो ये मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है, और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से एजुकेशनल प्लानिंग, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रही हूँ। तो कि अभी आपको कई सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और बाकायदा जो आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट भी हुई हैं, अब इंशाल्लाह सितंबर के माह में आप बाहर जाएंगी मास्टर्स के लिए। लेकिन वो जो तालिबे इल्म अभी हमें देख रहे हैं, उनके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि हम भी चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है? तो काफी सारी स्कॉलरशिप होती है फॉर स्टडीइंग अब्रॉड। आई वुड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट चीवनिंग। तो चीवनिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको पहले भरनी होती है। सो यू हैव टू राइट सर्टेन एसेज based on your work experience or based on your experience in general. तो start होती है applications in August or September, and the deadline is around November. तो आपको 3 महीने का टाइम होता है to do your applications. However, it is advisable कि आप अपनी research पहले start करें. If you want to apply to the scholarship, it is advisable कि आप 6 months पहले ही अपना research start करें at least. एंड नवंबर में डेडलाइंस होती है, फिर आपका
उसके बाद इफ योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस टू द नेक्स्ट स्टेज, यू हैव टू सिट फॉर एन इंटरव्यू, जो कि अराउंड फरवरी में आपके इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं, अराउंड हम्म। मई तक आपके इंटरव्यू हो जाते हैं, और फिर अराउंड जून और जुलाई आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। आपने इसके लिए तैयारी की, किस तरह की तैयारी की, और जो भी तालिब इल्म हमें देख रहे हैं वो किस तरह की तैयारी करें? I would say first of all, it is important to identify कि आपको कौन सा कोर्स करना है, एंड हम्म। उसी बेसिस पे आप अपने पैरेलली अपने कॉलेज एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, while also preparing for the scholarship. स्कॉलरशिप के लिए आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज टू रिसर्च एज मच एज हम्म। पॉसिबल। आप उसका ओके। प्रोसीजर उससे फेमिलियर हो जाए, यू लुक अप द प्रोसीजर, द प्रोसेस, व्हाट्स द प्रोसेस, व्हाट इज द एप्लीकेशन लुक लाइक। काफी रिसोर्सेज है ऑनलाइन, द एक्सचेंजिंग वेबसाइट ऑल्सो, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी। तो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है। आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए कोई तालिबे इल्म अप्लाई करता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है उसके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हो। प्रैक्टिकली वो करता क्या है, उसने क्या किया, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी शामिल है, लीडरशिप क्वालिटीज होना लाजमी है। तो आप क्या समझती हैं, ये जो एलिमेंट है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं यहाँ, ये कितना जरूरी है? एक्चुअली जो चीनिंग स्कॉलरशिप है वो बेस्ड ही इस पे है कि आप दे वांट टू सी इफ द कैंडिडेट हैज द लीडरशिप पोटेंशियल। It is not an academic scholarship. I mean, of course, academics do play an important role, but it's mainly a scholarship for future leaders. So they want to see if you have the leadership qualities, and based on that, you are selected. I would suggest, मतलब आप और opportunities जो होती हैं, internships कर ले, volunteering experience, volunteer करें to develop your skills, because extracurriculars में when I say extracurriculars, I don't mean sports, or I mean, of course, that is also important. If you're doing that, do that. But what I mean is develop like a holistic, background experience. वो एक सदफ जिसने पहले लाइफ में इस तरह से कदम रखा, एक मखसूस स्कूल के हवाले से आपने जिक्र किया, वहां तालीम आपने हासिल की, बुनियादी तालीम आपने एक स्कूल में हासिल की, और उसके बाद इस प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप के लिए बाहर जा रही हैं। अब आप इस जर्नी को आप किस तरह से सम अप करेंगी? I would say that I was privileged enough to get a good education. My parents are always supportive of my decisions. जो भी मैंने करियर डिसीजंस ली है वो मैंने खुद से लिए हैं, and my parents have been supportive of that. They will let me explore my career options as well. जैसे कि 12th के बाद से when a lot of parents in Kashmir, they want their kids to study medicine or engineering, क्योंकि हमें लगता है कि यही बस career होते हैं. My parents have never forced me or never stressed upon any such things. So I've always had the freedom, and I think that's a privilege that very few have. My parents have always given me the freedom to make my own choices, to make my own decisions. So I would say that is a primary factor that has, enabled me to get here. इस एक मखसूस स्कॉलरशिप, चिवनिंग स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, इसके लिए हर साल कई सारे बच्चे मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हमें प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। और जैसा कि आपने कहा, 2 सालों से लगातार आप कोशिश कर रही हैं कि इस स्कॉलरशिप के जरिए से आपको दाखिला मिले बाहर किसी यूनिवर्सिटी में। अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह बाहर एक मखसूस यूनिवर्सिटी में दाखिला तो मिला, लेकिन हमें ये बताइएगा, आसान ये सफर नहीं रहता है, आपको कई सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, बहुत कुछ इन 2 सालों में देखा भी होगा, क्या क्या देखा? Of course, it was not easy at all, and particularly if you don't have any mentors as such. और क्योंकि मैंने अपने बैचलर्स भी डिग्री कॉलेज वेबनार से किया है, तो दैट वाज आल्सो ए चैलेंज, क्योंकि आप जब कॉलेज एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है अपने प्रोफेसर से, एंड when I went to my college to get my college references from my professors, they did not know what it meant. I had to explain to them कि क्या होता है, कैसे करना होता है,
And I remember I was applying to Harvard once, and one of my professors, he had to send a reference. I explained everything to him, how to do it and what to do, but he still ended up, sending an empty reference. So that is because he was not aware of how to do it. So मतलब students को की बात है, हमारे यहाँ पे academic circles में professors को भी awareness नहीं होता है कि ये opportunities है और बच्चों को कैसे help करें to avail those opportunities. Whereas if you look at colleges, even in India, the professors, वो बच्चों के लिए mentorship भी करते हैं. They help them, avail these opportunities. They take care of everything themselves. So बच्चों को भी help हो जाता है. But I had to do it on my own. So that was definitely a struggle. Besides that, I would say when I पहली बार जब मैंने apply किया था, it took me around 4 months to just draft the essays. And another struggle was to, find people who would help me review those essays. क्योंकि आपको उन 4 essays के basis पे ही आपका interview का selection होता है. So it's very important that you spend a good amount of time perfecting your essays as well. So what I did was I connected with past alumni on social media, and thankfully a lot of people did come forward to help. So I think main struggle yahi tha ki I had to learn by, through making mistakes. So I think, and also doing everything by my own, that was the main struggle. And I think the first time that I got rejected, I learned a lot from that experience, what to do, what not to do, how to go about it. And that is why I think in the second attempt, I was able to get. Achieving is not an academic scholarship at all. It's a leadership scholarship. So आपका academic background, of course, it matter करता है. It matters to a certain extent. But if you're average at studies, whatever that average definition means, हमारे लिए average का कोई और definition होता है. I don't think it's anything like average or exceptional. But even though अगर आपका average background रहा है academically, but you have done a considerable amount of work, impactful work, I think there shouldn't be a problem of you getting through the scholarship. It's not at all कि आपका academics ही strong होना चाहिए, बल्कि that is just, I think Chevening doesn't at all stress on a good academic background. To a certain extent, it is important, but beyond that, it's all about the work that you've done, what you've done, आपका work experience, आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, कितना impactful काम किया है, वो matter करता है. अब आप इंशाल्लाह जा रही हैं सितंबर के माह में, तो किस तरह की तैयारी है? अभी रिजल्ट का पता चला है, so there's a lot I have to figure out still. अभी वीजा का प्रोसेस होगा, there's other preparation one has to do as well. तो yeah, एक मैसेज हमारे तालिब इल्म तक पहुंचाए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, ताकि वो इंस्पायर हो सके. I would say, I think my main message would be to apply. Don't self-reject. I think that's the greatest advice I have gotten, and I would like to, pay that forward. That don't self-reject. Apply, no matter if you think you're not qualified enough, if you think that you're an average student, or if you think that you wouldn't possibly be able to get through the scholarship, still apply. Let the committee be the judge of, if you are deserving enough. So yeah, just apply. कोई इंसान कोई मकाम हासिल कर लेता है और उसके बाद वहां तक पहुंचना, ये हाँ जाहिर सी बात है अकेले की मेहनत उसकी होती है, हम ये मानते हैं, लेकिन कुछ लोग भी होते हैं ना जो उसके साथ साथ होते हैं, कदम से कदम मिलाकर. कौन था? A lot of people have supported me in this journey, but I would specifically like to thank my parents, who always believed in me and who gave me the freedom to explore different opportunities in life. So yes, I would like to thank my father and my mother. In addition to that, I'd also like to thank my sister, who's been supportive throughout, and of course my friends. जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. अच्छा लगा आपसे बात करके, और मजीद हम चाहेंगे कि यही तो दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको और ज्यादा तरक्की दे. थैंक यू सो मच. Thank you.